So welcome you back. So today is the third day. So before going to learn Brahmi, I have some questions. So you have to follow the instructions and answer all the questions. Then we will proceed. So I would like to explain you. Recognize the Brahmi alphabets. So you have to recognize. You can tell me line number 1, this are there. आप पहचानिए, recognize the alphabets of Brahmi. कौन से ब्राह्मी के अक्षर इसमें दिखाई दे रहा है आपको? I have mixed up with other letters, other syllables. So you have to recognize. So who can tell me in the first row? You go through row wise. So you have to tell me the first row, which letter is there? First, second letter O. Very good. Then, no, go to first line, go to up to the end. Last तक जाइए ना. और भी है ना, कौन से हैं? कहाँ फोर्थ वन पा है? नहीं, पा वैसे नहीं होता, वो तो ऊपर होता है ना आकार. आकार है जो ऑलवेज टॉप ऑन टॉप. फिर क्या है? नहीं, ख है. मैंने 2 प्रकार का ख बताया था आपको. ये है ना, दिस इज ख. इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है. फिर कैसा ध्यान है? सेकेंड लाइन, सेकेंड रो. हाँ, ज. देन घ. ओके, ज. देन आफ्टर ज देयर इज घ. देन थ. ओके, देन ण. ओके, थर्ड लाइन. थर्ड लाइन, सेकेंड लास्ट य. ओके, वेरी गुड. देन फोर्थ लाइन आ. ओके, दिस इज आ. ओके, दिस इज ट. ओके, then ga, and then da. So my dear participants online, so I'm very sorry that there is no direct interaction with you. Just this is the way to recognize some of the selected alphabets of Brahmi script. Okay, so there is a second question for all of you. And for the second question, you have to do yourself, don't talk with each other. Okay, first read the, can you see now? कोई किससे बात नहीं करेगा. Don't talk with each other. Make some words by using the following Brahmi script. I have given a number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And given an example, 1, 6, 1 is ga, 6 is ja, gaja. So out of these alphabets, you have to make some word. Don't talk with each other. Seven and, okay, 7. What is 7? No. Which word is it? Not that is never used in Sanskrit or Pali. Okay, which one? First and 7. The first is ga, 7 is na, gana. That is correct. Okay. 1 minute, 1, 1. 4 and 1. Okay, what is 4? Ha. 1 is ga, khaga. Very good. 1 minute, 1, 1 bolo. Ha. 2 and 9. Bhata. Very good.
7 and 4. 7 is na. 4 is no. It is naka. No, it is no. It should be no. No. You are from which area? तुम्हारे गांव में ऐसे बोलते हैं घर में, तो फिर हाँ 6 and 1. ओके 6 and 1, तो 6 हो गया जगह. ओके 5 and 7. ओके 5 हो गया क, 7 हो गया ना कण. ओके 6 1 7. ओके वेरी गुड. 6 1 ग 7 जगण. 5 and 9. Okay cut. Okay thank you. Okay, so my dear participant online, you can also practice yourself. Okay, you can have a screenshot, so we can have another question, the last question for all of you. Don't talk with each other. It's a very interesting question. Arrange the following Brahmi letters. Sorry, I have to arrange following Brahmi letters in alphabetic order. Don't talk with each other. You have to give me a number. I have given the number. You have given a big number. Don't talk. Give me the final number. So dear participant online, please look at this. So you have to go through. Please complete it fast. You have to completely look at all alphabets in alphabetical order and give me a number. So if anyone in online can share everything onto the question answer, I can check. Okay. Voice nahi aa raha hai abhi. I think already. One minute. Only one person first tell. Who is telling? We can tell. Sisirji. Okay, tell me. 9 5 1 6 2 4. Very good. It is correct. So alphabetically you can arrange them. Okay. Okay. So thank you all. So today we are going to see the conjunct clusters, जिसको हम कहते हैं जोड़ाक्षर. दो व्यंजन का सम्मिश्रण. The combination of two or more than two consonants. So in the Brahmi script, suppose you want to let kya. This is kya. K-Y-A. How to do? So ka. Okay. And it is actually ya. Then how both consonants should be combined? This is the question. How to do it? If you do like ka and then ya, you see, if you take the same size, both letters, it will look like it is wrong. How to do it? Kya,
ka, ya. Okay, so I can change the color and maybe tell you this is the this person, this, so it is kya. And there is another type of ya also. This is also kya. Write down. Okay, so we have three types of ya. What are they? One ya. Also ya. Also ya. Below all three are ya. So kya. Again I can write ka, ya. Or we can say ka, ya. Or we can have ka, ya. That is kya. Is it clear? Okay. Suppose we want to write a vakya. How to write a vakya? Okay. You cannot do like this, like va, ka, ya. No. So you have to adjust with all the letters in same length. Okay. So vakya. How to write vakya? Vakya. Any of the year you can take. Okay. Sunda, like Ananda. Okay. Ananda. Ananda. So a. Na. Then na and the. Na. Ananda. Okay. Ananda. Ananda. Like Japya. Pa with ya. Japya. Ja. Pa. Japya. Here I am giving you some selected examples. As I sent you yesterday night, today, tonight also I'll send you. So many alphabets and their combination, everything. Okay. So, Japya. Now you can tell me words. Huh? Vakhyani. Vakyani. Okay. Va. Kya? Vakyani. Sorry. Vakyani. Any other word? No, we have not learned that one. Nanda already we have. Vyaksya. This no? Okay. Then with ya. Okay. Okay. Vyaksha.
No, it will on the top. Okay. So now you can see any other word? हाँ, ख्याति में क्या ख और य वो तो दिखाया ना. Give some new conjunct. हाँ, धर्मपाल, धर्मफल है ना. प पा ये हो गया पाल. हाँ, okay. So combination of a raw combination we can see. It is a very good question, and also I was thinking to tell you how to add letter ra after the consonant and before the consonant. क्योंकि हमारे पास क्या है, रकार में consonant के बाद भी रकार आता है. The ra comes after the consonant and also consonant comes after the ra. So in the case of dharma, first we will say this word dharma. So this is dha. Okay. Then ma. Here you have little bit curve. Dharma. Okay. So it may be dharma or it may be dhamra. Both is possible. Because that time it was not clear. In Devanagari, what we are doing in the Devanagari, see, like we can say karma or ma, rma or mra. In the case of rma or mra, it is rma or mra. Both will be like one possibility, okay, and the second possibility. Now there is a question: if in the case of ra ma a and ma ra a, ma or mra, how to decide? It can be only decide while you are reading according to the context. जिस प्रकार का संदर्भ है उस संदर्भ को मरा होगा तो मरा, रमा होगा तो रमा. ठीक है. सो योर क्वेश्चन वाज अबाउट धर्मपाल. नीचे देवनागरी में आया. हाँ, नहीं. So Dharmapala, the question was about Dharmapala. This is the word Dharmapala. Dharmapala. So Dha Dharma Pa Pa La Dharmapala. Okay. तब अनंत, अनंत अ न न त. So there is a question. This ta maybe looks like dirgha u. So you have to be very careful. If you say na nu, maybe because this stroke looks like ta and also sometimes looks like u also, long u in the inscriptions. So in that context, actually what you have to do, context wise you have to decide. आपको संदर्भ सहित देखना पड़ेगा what exactly there. Okay. So अनंत. वो अभी सीखा नहीं ना आप लोगों ने. हाँ, जो मैंने बताया उसी के भीतर बताओ. हाँ, नो रमा हो गया. हाँ हाँ,
हाँ, कर्तव्य, वेरी गुड, कर्तव्य, का, कर्ता, कर्तव्य, हाँ हाँ हाँ, द्वित्व भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, द्वित्व करेंगे तो ये हो जाएगा त, फिर हो जाएगा ये त, फिर हो ये इसके ऊपर कर देंगे। ठीक है, द्वितीय वाला। कर्ण, 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 हाउ टू राइट कर्ण, का, okay, and this is no, what to do, who can give me the idea, huh, middle, हाँ, actually it should be here, okay. In the inscription you can suppose you want to write bra, because we have some examples, the combination of va and ra in the Ashokan inscriptions, always Samana and Brahmana, bra. Okay, please note down, this is the ra, हाँ, थोड़ा सा हल्का सा दिखता है, वो आधा पूरा आपको, ओनली यू हैव लिटिल बिट कर्व इनसाइड द लेटर, इनसाइड द लेटर, विसर्ग, विसर्ग नहीं है पाली में, पाली प्राकृत में देयर इज नो विसर्ग इन पाली एंड प्राकृत, ओके, in the latter period you can see, but in the Ashokan inscriptions we never find visarga, because that language not having that visarga, only the anuswar is, okay, bra. Archana, 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 oh, okay, arch, then archana, okay. Buddha, how to write Buddha, the combination, okay. So ba is bu, the and the, Buddha. How to do it? Bu. It's clear? Then the. Okay? Buddha. So whenever you are learning the consonant combinations, you can write more words back home. घर पे जाकर के ज्यादा शब्द लिखिए, ठीक है? बुद्धा, another word, रुकार नहीं है, okay. So now 4 alphabets actually we have not learned yet, okay. What are they? Okay, write down. You know Shara, arrow, looks like arrow. Okay, please write down. I'm talking about the palatal sha. Okay,
So please go to the next one, the Mrudna. Vertical line, then looks like paw, no? And then a stroke here. This is sha. Please note down. वो कई प्रकार के हैं, बीच में भी है, थोड़ा डाउन भी है, उसके वेराइटीज है, यहाँ भी ऐसा भी है, ऐसा, और कहीं ये ऐसा भी आ जाता है थोड़ा ऐसा करके, ठीक है, लेकिन एक स्ट्रोक है बीच में, थोड़ा डाउन भी है, ऊपर भी है, ठीक है, तो ये हो गया शा. Now only one remaining, that is take one line little down, going to the right side, and another stroke coming to the left side. So, okay. Now only one letter is remaining. What is this? This is la. Just opposite. This is ha. Okay. Okay, so now you have seen all the alphabets, that is the vowels and consonants. Okay. Suppose adya, a, the, ya, adya, adya. ठीक है. सपोज किम करा, किम करा, किम करा, हाउ टू डू? किम करा, किम करा. ओके. सप्त, सप्त, सप्त मीन्स 7. सप्त, सा, प, and then ta. Sapta. Okay. Sapta. Any other word? हाँ, फिर से लिखूं, क्या लिखूं? सप्त. हाँ, अच्छा, बुद्ध. ओके. Ba with U. So ba is a square, and then you have this vertical line, that is U. ये भी रहेगा, ठीक है. और द, ध, बुद्ध. ठीक है. हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? बट समुद्र, ठीक है, समुद्र, सी, समुद्र, स, म with U, mu, समुद्र. ओके. नीचे की ओर देखना पड़ेगा, कहीं कहीं है, ठीक है. हाँ, समुद्र, लेकिन बहुत रेयर केसेस. हाँ, व्हाट इज समर्थ, समर्थ, स, म, र एंड थ. ओके.
So such combination I have not seen, but this is tha, okay, but we can have a curve on the top. It is just imagine, okay. Samartha, okay, next. हाँ, अमरेंदु, प्रॉब्लम कहाँ है अमरेंदु में? अ में तो प्रॉब्लम है नहीं, म तो क्लियर हो गया। जहां प्रॉब्लम हो न द, देखो अमरेंदु न द उ दु हो गया ना? हाँ हाँ, अभी देखिए तृप्त में क्या है, ये त्र है, प है और त है, तृप्त, सेटिस्फेक्शन, यही कह रहे हैं ना? तृप्त, तृप्त। So there is no row, this row is not there. Okay. Right. There may be some other session, other class. How the Sanskrit word you can write all the Sanskrit words. But in the inscriptions, we don't have this row in Ashokan inscription. Next. श्रद्धा, ये है ना? तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? ये कर दीजिए, ठीक है, फिर इसमें ये हो जाएगा इधर, फिर द ध आकर। ओके, एनी ऑप्शन? सन्निकर्ष में प्रॉब्लम कहाँ है? साथ में प्रॉब्लम नहीं है, नी में तो प्रॉब्लम नहीं है, क में तो है नहीं। हाँ, र और स में ना, आप ये वाला पूछ रहे हो ना, यही है ना, रस्सा। तो ये हो गया, इसी को थोड़ा ये कर दो और क्या, रखा वही आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, लुम्बिनी, तो म ऐसा करेंगे ना, लुम करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं आप, ये ल हो गया, ये हो गया, ऐसा कर दीजिए, लुम कर दीजिए, ठीक है, और विनी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनुसार में करेंगे। और मात्रा में करेंगे तो म के साथ फिर ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, एनी अदर? नहीं, धम्म या धर्म? धम्म, ये पाली में जो धम्म है ना, धम्म, ठीक है, ध म, धम्म, ये आप कह रहे हैं ना, यही चाहिए ना आपको, धम्म। क्या बोल रहे हो? मतलब ये बोला ब वाला? ठीक है, और एक मिनट, हाँ बोलिए, क्या सुना नहीं दे रहा मुझे? सारथी, ऐसा है ना? दंते वाला, ऐसा कर दीजिए, आई हो गया डबल, सही, साइला, या जो भी आप कर सकते हो, आइकर तो ऐसे लगेगा ना, सो यू हैव द आइकर लाइक दिस। ओके, ओके, नेक्स्ट। बोलिए। हाँ, एक मिनट, शैलंध्री, शब्द क्या है? द्रि, न, फिर ध,
रकार, ऐसा। तो इसमें ना हो गया, ध हो गया। ये जो ध वाला स्ट्रोक रहेगा इधर ही आपको थोड़ा जिगजैग करना पड़ेगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, एक ही मात्रा। Actually, just you imagine the graphic of raw. Raw is like little bit, so that you have to insert in the alphabet. Okay. What? Sorry. ग्रंथ, ये हो गया ग, ठीक है। तो रॉ में ही करना पड़ेगा आपको, ग्रह। फिर न, ग्रंथ, न था। ओके। द्वा में प्रॉब्लम कौन सा लेटर में वो बताइए। भ में कोई दिक्कत नहीं है, र में कोई दिक्कत नहीं है, तो द्व शब्द है ना, तो द व द्व। यू हैव टू फोकस मंत्र। ओके, मंत्र म न त्र, मंत्र, मंत्र। ओके। एनी अदर? Actually, Shilalik में mainly what you find in the inscription, there are conjuncts of Pali conjuncts mostly. The conjuncts available in Prakrit languages. But whenever you learn the basic alphabet, there is a possibility you can combine them. एक बार आपने अक्षर सीख लिया, ठीक है, जो लॉजिक है जोड़ाक्षर का या इंडिविजुअल लेटर का, you can join them. ठीक है। तो मैंने आपको एक शिलालेख, ऑलरेडी आई हैव गिवन ऑल ऑफ यू वन इंस्क्रिप्शन। So in that inscription, how to share that inscription? इसको ऑन कीजिए, नहीं लीजिए मत, ये है। So, okay. Now I am writing, you try to understand what I am going to write. What is this? Then it means they wa devan. Okay, devan. Then pa, ye, then na, payen. So devana payen. So I just want to go through. नहीं हो रहा है? Anyone can share from your mobile that inscription. Who can share? I don't know. Can you share? Because I am not able to share it now. Huh? Wi-Fi password. Okay. I think Madhusudan is there somewhere. Very good. Thank you, Madhusudan ji. Very good. So now, actually, I told you to copy this inscription. Why? While you are copying the inscription, so you have to look at the each and every stroke. Every stroke means, maybe we can little bigger. Okay. Okay, now you can see. So if you look at the first letter, da is clear. Then after the
you can see on the top that there is a one A. So they. And then wa and a. They wa. Then na. Devana. Clear? Then come to pa and then a. Pa. Then ya with ekare. Pa ye. And then na. So devana. Pa ye na. So pa and then there is the vertical stroke. That is P. Pa with ikara. P. Then P ya. After P the. And then danta dental sa. You can see sa and the top there is the E. Look at very carefully. Okay. So you can see here. P ya the sakara on the top of the sa. Okay. There is one horizontal line, that is a. Then there is another vertical line. The both lines is E now. So Piya Dasi then Na. After that, La with A, La. And then Ja on the top there is E, La Ji Na. Okay. After that, V with Dirgha E or Harswa E. You can see on the top of the Va, there are two vertical lines. So Dirgha E, V. After that, then Sa, V Sa, V Sa, then Ta, very clearly Ta you can see, and on the top of the vertical there is the Harswa E, short. Very easily you can recognize the Va having long E, double stroke, and Ta is having only one stroke. So V Sa, V Sa Ti. Then No Va Sa. Very good. Va Sa. After that, Bhi, Pa, Pha, Ba, Bha. Then Bha, there is Ikara. Okay. Vi, Sa, Ti, Va, Sa, Bhi. Then there is Sakara. Dental Sa. Then Sa, on the top there is E. So Vi, Sa, Ti, Va, Sa, Bhi, Si, Te, Na. Actually 20 years. Vimsati. The Sanskrit word is Vimsati. Okay. We will read also. We have time today. Don't worry. I'll give you the meaning also. Then second line. A. Very clearly written A. And then A, then Ta. It's very clear. A, Ta. Okay. A, Ta, Na. A. A. You see, A, you can very clearly see Akara, and there is a stroke in the middle. A, Ta, Na. A, Ga, there is a horizontal line on the top. Agacha. Agacha का मतलब होता है आगत्य. The Sanskrit word is आगत्य, आ करके. Okay. तो आगाच मतलब आगत्य. Okay. Next. Ma. No, ma see he. You see law and ha. Hika, hakara. Ma, he. You can see on the top of the ha there are two vertical lines. Mahi, long E. Mahi. And then yakara. And then ikara. Mahi, E, and te. Mahi, te. Next, he, the, hakara, then ikara. Okay, then the. Here see the bu. Ba, and there is a vertical line.
below. So he, the, bu, and the and ekara. Buddhe. Look at here, ja, very careful. You can see there is a dot. And after the dot, there is a horizontal line. It means he, the, bu, the, ja, te. He, the मतलब here. यहाँ, here. बुद्ध जाते, बुद्ध का जन्म हुआ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना, हीद बुधे जाते. सेकेंड लाइन क्लियर. ध्यान से देखो, कला को पूरा एक इंस्क्रिप्शन मिलेगा ट्रांसक्राइब करने के लिए. आई एम गोइंग टू गिव यू वन इंस्क्रिप्शन टू ट्रांसक्राइब फॉर टुमारो. ओके, थर्ड लाइन हु कैन रीड? सीला लगा लगा. ये बड़ा क्या था? Okay, now you can see. मैं तो यहाँ कर रहा, यहाँ क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, okay. Now the third line, you can see Sila. The third line, I'm talking about the third line. Sakara and Ikara. Si and La with Akara. Sila. After that, Wa and E. Sila, Vi. Then Ga. Then Da. Then He. Then Cha. Okay. After that, Ka. Ka with A. Ka. La. Pa with E. Kala. Pita. Kakara. Akara. Then La with A. Kala. Pa with E. Pita. Kala Pita. Si. Dantesa Si. Sila. La with Akara. Sila. Then Tha. You can see the Tha very clearly. There is the round, the circle, and in the middle there is a dot. Okay, so Sila, Tha, Bhe, Tha and Ekara. Look at Bha, Ekara is the left side top. Bhe, Cha. Okay, Sila, Tha, Bhe, Cha. Then U, Harswa U. Then Usa, Pa, Pi, Pa, Pi. Look at your Pa. Pa means there is a horizontal line on the top. If it is a P, there is a horizontal line joining a vertical line. तो क्या हो जाएगा? C ने U, Pa, P, Te, Ta and A. A always left side to the top. Okay, and then the fourth line. Hakara. Look at very clearly. Hakara we have here. Ha with E. He, the. Bha. Bha. Then. Nahi, bha, ga. Bha, ga. After a va, there is a anuswara. Bhagavam. Bhagavam. Then jate. Jakara. There is a dot. Again. There is a dot with A. Okay. So Bhagavam jate ti. Jate and ta mein ikara. Jate ti. Then Lu, you can see there is a dot in the below. Lum. Lakara and ukara vertical line. Lu. And then there is a dot. La with U with anuswar. Lum. Ma. Ikara, mi, lumini, game, ga, akara, ga, and ma, ikara, me. Okay. मैं यहाँ से शेयर नहीं कर सकता हूँ ना? नहीं हो रहा है. यहाँ शेयर करेंगे तो मैं थोड़ा और बढ़िया से दिखा सकता हूँ. चलिए.
कोई बात, इसको खत्म करते भी दूसरा देखें, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट, लुम्बिनी गामे, देन उ व ली, उबली के क एंड टे। लुक एट हियर टे। तुम कहां देख रही हो? हेलो, टे इधर है, तुमको बोल रहा है, तुम उधर कहां देख रही हो? इधर देखो, ठीक है। तो टकार एंड एकार, ओके, टे नहीं, वो ऐसे एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट वर्ड, अ ख भा गी ये च, अट्ठभागिये च, ओके। अभी इससे मान लीजिए हम ये करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? इसे कर सकते ना? यहाँ शेयर कर सकते ना? Now you can see, okay. So what you do, all my dear participants, I'm giving you 5 minutes. Try to transcribe the first line. All the participants online and offline, I request all of you, try to recognize the first line of the given inscription on the screen. And I can see there are 125 suggestions or questions. So maybe after 10 minutes, I will give answer one by one. But now please go through it. Only first write down only alphabets. What are the alphabets and the matras? Try to do. So which one is the first? That is sa. Okay, sa. And then no, sarvata. Because the old inscription and all the strokes are not clearly visible, but the rakar is there. And then there is, you can see there is a little curve here on the top. Then circle, sarva ta. Okay, very good. Next one, vakara. Look at here, ikara. Va and e both is combined. Both strokes are combined now. V. Then ja with ikara. Look at here, the ja. Bg, vakara, ikara, and ja and e. Vg. Then ta. Who can tell me the next conjunct? So look at here. Makar is very clear. No. And it is ha. This is ha. No. Viji tamhi. Takara, makara, and the below there is the hakara. And then here on the top it is ikara. Viji tamhi. So today is Wednesday, no? So today we'll just read and tomorrow I will give you the meaning. There is some problem with the sharing that we will solve tonight. So Viji tamhi. Viji tamhi, then where is they? Then va, a, deva, na, and anuswar. Devanam. Then P or pre. There is a little curve, no? Pre. Then, and this is not the, this is the no anuswar. It is not anuswar. It's the scratches, okay? So Devanam, then Priya, Piyasa, then look at here. Piyasa
and pa and e, p and ya and the and c. So we can slowly again we can see here Bijitammi. After that it is the with ekara de, wa with akara de wa. The vertical line, horizontal line, that is na, deva na. Okay. Or pa with ya, and pa with e, or pa e, pri ya sa. Okay. And then p ya the, and then c, priyadasi. Then priyadasi, no. Look at here, no. Nakara and okara. Okay. Who can read the last word? You can look the ra very clearly, and the top that is the a, ra. Then yakar is there, then okar is there. रायो, ओकार उल्टा है, यहाँ रिवर्स ऑर्डर में है. कैसे? Look at here. This is ya. There is a little hook on the top, and the vertical line looks like Roman H, and one stroke to the right side, one to the left side. That is okara. It means that rayo. Rayo means raja, king. Okay. So we can see here again. नहीं. सर्वत विदितम्हि देवानम प्रिय स प्रियदसिनो रायो. आपको आ रहा होगा, लेकिन जो ऑनलाइन है उनके लिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो बहुत दूर दूर में बैठे हैं, लगभग 395 है, उनके लिए थोड़ा सा कोशिश किया जा रहा है. Okay, now the second line. Second line, look at here. This is the triangle A. Then eva. After that, ma. Then eva, mapi. Huh? Huh? एवं एवं अपि प च में अनुस्वार. पंचे ते सु य थ यथ चो डा. Okay, just 1 minute. That you can read. Tomorrow we can see. Just 1 minute. I can have another. It is little more clear, no? Can you see? Okay. What is written there? Here. Not do. Again the same. They. हाँ, देवा न पियो. हाँ, कल से वो उतरा लाइट ये लाओ हाइलाइटर. हाँ, देवा न पियो. पियो. यो है ना ऊपर, दोनों साइड है ना, ये ऊपर है ना. पियो.
Then Priyadasi, Raj, na wa. Okay. Anyway, so just wait. I'll stop the share. So I have to see the questions. First 1 minute. Again, I may send to all. Okay, so any question we can discuss, and I'm going to give you some inscriptions today so that you can look that inscription and we will read that. Okay. So any question do you have? We can discuss a little bit, then we can, because while you are reading the inscription, whatever you learned actually in the class and reading inscription is two different things. क्योंकि जब आप अभिलेख पढ़ेंगे उसमें जो मात्राएं हैं और की जो लिखावट है जो आपने सीखा उससे थोड़ा भिन्न है. जब एक दो इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार का होना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इंस्क्रिप्शंस आपको दिया गया है, जैसे अभी मैंने एक दिया था आपको, ठीक है, अभी आपने उसको देखा ना, पूरा लिखा आपने, उसको भी ट्रांसक्राइब करो रात में बैठ करके. ओके, तो पहले क्या था, देवानम पियो पियदस्सी. एक्चुअली पियदस्सी इज द एपिथेट फॉर अशोक. देवानम पिय पियदस्सी. ओके, तो ये जो इंस्क्रिप्शंस है ये किसके बारे में है? वो क्या कहता है, देवानम पियो पियदस्सी राजे, मतलब जो राजा है क्या है ना, विंशति वर्षा मतलब विंशति वर्ष आफ्टर द 20 years ऑफ हिज कोरोनेशन. राज्याभिषेक के 20 साल के बाद ही विजिटेड द लुम्बिनी. ओके, एंड देन ही केम टू नो दैट दैट वाज द प्लेस, द बर्थ प्लेस ऑफ तथागत बुद्ध. जस्ट गिविंग द आइडिया. देन देयर इज ए exempted of the tax. क्योंकि भगवान बुद्ध का वहां जन्म हुआ था तो उन्होंने कर माफ कर दिया, उतना लिखा है. ओके, इन दिस 4-5 lines, अट्ठभागी मीन्स 8, one of the 8. ठीक है, अभी ये लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन है. ठीक है, ये नेपाल में है. रुमनदेई इंस्क्रिप्शन लुम्बिनी नेपाल में है. और यहाँ वो पिलर इंस्क्रिप्शन है और उस पिलर इंस्क्रिप्शन में आपको ये देखने मिलता है. ठीक है, ठीक है. हाँ, व्हाट इज द क्वेश्चन? नंबर्स होते हैं, बिल्कुल नंबर होते हैं, नंबर्स होते हैं, आपको बताया जाएगा. नंबर भी है, लेकिन नंबर क्या है, in Ashokan inscriptions actually we cannot find all the numbers. In the latter inscription we can have the numbers, so I can tell you that number from 1 to 10. Sorry, 0 to 9 you can do the 10. 0 to 9 is there. Okay, that also you can do. हाँ, लेकिन ये तो यहाँ दिख रहा है कि कम क्वेश्चन है, इधर 43 दिखा रहा है मुझे. यहाँ मुझे 43 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं. गायब हो गया. चलिए, जो भी हो, अभी सभी को तो दिया दोबारा इसको जोड़ने के लिए, लेकिन हम लोग कि इतना स्टूडेंट होंगे, हम उसके छोटे से रूम में करने वाले थे, सोचे कि नहीं छोटे से और एक कोई रूम में करें. ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए, थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इश्यूज है.
ठीक है, तो और कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आज रखेंगे फिर इधर ही, रखे ना, ठीक है। हाँ, संस्कृत को ब्राह्मी लिपि मतलब संस्कृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। एक तो जो रिकार की मात्रा है वहाँ थोड़ा सा आपको अलग सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हलंत के लिए अलग के हलंत का है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी लिखना चाहता हूँ, व्यवस्था नहीं है। मैं आपको दिखा था, क्योंकि शारदा में क्या है ना, हलंत अलग प्रकार का है, अभी जो देवनागरी में हलंत है वो भी अलग प्रकार का है, ठीक है। तो all my dear online participants, so see you tomorrow, and I have given you the links, so I request all the dear participants, online participants, you can see in the chat box, so we have sent 2-3 links, so kindly join with the WhatsApp group. Open this link for Brahmi Workshop WhatsApp group, so join that link, and also we are going to share our YouTube channel, all the lectures, so you can join with the links, so that will help you. Again, I am sending you the links. Thank you all, kindly join. Thank you. Homework I will send you. I will send you 2 inscriptions to transcribe. So all my dear participants, today I am going to send you 2 inscriptions. So you have to transcribe now. And all the homework you can send to me to the WhatsApp. I can correct and get back to you. Thank you. Thank you all. And try to join with the WhatsApp group. That will help us through your homework and assignments, and also I can share all the documents to you. Thank you.